टेस्टी बनाया है तनवीर बेटी ने। चटनी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको भी कहना है मम्मी दादा बताना आपको कैसा लगा कमेंट। Hello everyone, so today I'm making pulao because it's Dalima Baba's last day in Australia. So I'm making it for the second time. So first you obviously put the cooker on the gas and turn the gas on. Then you put this much ghee in it. So it's a big spoon of ghee, yeah? So after the ghee melts, you put some cumin seeds in and let them roast for a while. Next you put in chopped onions. So after like some minutes, you can just like stir it for a little while. And now you put in the tomatoes. Then you put half a teaspoon of turmeric powder in the cooker. Then you put salt to taste in. So I put a whole teaspoon of salt. So then you put dhania powder in. And then you put red chili powder. And then you stir it. चलो स्टर का मतलब क्या होता है? चलाओ. चलाओ. So अब आप सब्जियां डाल सकते हो जैसे आलू, पनीर और मटर. So I soaked about 1.5 cup of rice for half an hour. So then you just stir it and then put the lid on. And because I soaked the rice for half an hour, so I'll wait for one whistle. But if you don't soak it, you can wait for maybe 2 whistles. Now I'm going to wait for 1 whistle. Okay, so the whistle just came. And now we're going to turn the gas off. Now when the lid opens, I'll show you the rice. So it's been a few minutes now, so let's open it. It looks yummy. So now I'm just going to mix it a little. So let's serve it hot for the special people I made it for. So let's serve it hot to Dalima and Baba. तो ये मैंने बनाया गाना बाबा आप लिए पुलाव. थैंक यू बेटे, बहुत बढ़िया. अरे मेरी बेटी ने, कैसे है? हमारा बेटी ने चावल बनाए हमारे लिए पुलाव में. हाँ. नहीं वाह, अपने हाथ से. वेरी गुड बेटे. शाबाश. थैंक यू बेटे, बहुत स्वाद है. अच्छा है. कैसा है बाबा? बहुत स्वादिष्ट बेटे. थैंक यू. अति स्वाद. चावल बहुत टेस्टी बनाया है तनवीर बेटी ने. और चटनी मैंने बनाई है. चटनी दीपिका ने बनाई है, लेकिन चटनी तो चटनी है, असली तो चावल का टेस्ट है. चटनी स्वाद नहीं बनी आज. चटनी स्वाद है वैसे तो, लेकिन बनाने का तो चावल का है ना. पर पोती ने चावल बनाया है, पोती ने चावल बनाया है. बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आपको भी कहना है मम्मी रोज ही बनावे बताओ दीपिका तो. बाकी तनवी ने जो बनाया है मेरे पोते ने बहुत स्वादिष्ट है. सही बात है, सही बात. पहला दफा बनाया आज. दादा दादी. So Tanvi, now let's take Papa's review also after Dadima Baba. So is it good?
Is it good? It is very good. Yes. Yummy. No. So Garvit, have a taste and tell me if it's good. Is it good? It's bad. Is it good? Good. Oh, Yay! High five. Didi made it. Didi made ये it. बेटे बहुत टेस्टी स्वादिष्ट शाबाश Thank you. ऐसे ही सीख लो बेटे धीरे धीरे हाँ Thank you. Thank you. So अब आप बताना आपको कैसा लगा कमेंट करके और make sure to like, share और subscribe. Thank you. Bye.